Policy experiments will be related to the four things, particularly one thing is saving, another one is population growth rate, and the third thing is the your depreciation rate, and fourth thing would be the technology. So we will be talking about the policy experiments of the four factors or the four exogenous variables that have been determined exogenously in that model, जो कि मॉडल के अंदर गिवन है पहले से. We can say that कि these are the shifting factors or these are the policy experiments. The first policy experiment is that okay, what will be the effect of increase in saving rate on the output growth, या इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर सेविंग रेट के इंक्रीज का क्या इफेक्ट हो सकता है. So what we can say that कि इस इफेक्ट को चेक करने के लिए we have this curly y over curly s is equal to curly f of k over curly s. We can say that curly y over curly s is basically the change coming in output caused by the change in saving rate, and we can write it in the further detail that curly f of k over curly s. अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, we can simply say that कि इसका डेरिवेटिव होगा that would be, अगर हम s की बात करें, it will become f prime k into f of k divided by n plus delta minus s f prime k. मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं की, otherwise it can be derived as well. इसकी डेरिवेशन यहाँ से मैंने skip की है, and simply that we will be just analyzing the things time को बचाने के लिए. Elasticity of output with respect to saving, we can say that okay, this is the elasticity of output with respect to the saving के respect से जो elasticity of output है, that is also derived here. अगर आप ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि elasticity of output with respect to saving is equal to share of capital divided by the share of labor. Alpha is basically the share of capital, and 1 minus alpha is the share of labor. So the elasticity of output with respect to saving rate, that is basically based on the share of capital and share of labor. इसका जो दारोमदार है, इसकी dependence जो सी है, that is basically on share of capital and share of labor. इसमें हम कह सकते हैं कि let's say if there comes a permanent increase in the saving rate, so that permanent increase in saving rate that will generate temporarily positive per capita growth rates, and in the long run the levels of k and y are permanently higher, but the per capita growth rates again will return to zero. हम दोबारा कह सकते हैं कि let's say initially आपके पास जो सेविंग रेट था that was S1, ये इस ग्राफ के अंदर जो S1 सेविंग रेट है, इस S1 सेविंग रेट के ऊपर जो स्टेडी स्टेट लेवल था that was K star 1, ये स्टेडी स्टेट लेवल जो था K star 1 था, and this particular portion that was in fact basically it was the steady state level जो कि इस वक्त आपके सामने है this point. This was the steady state level. अब steady state level के ऊपर equilibrium की और steady state की condition पूरी हो रही है कि which is S1 f of k over k is equal to n plus delta, वो n plus delta के बराबर है. K1 star is the first steady state level, and what happens, the government increases saving rate permanently. Government जो है permanently saving rate को increase कर देती है, तो saving rate जब increase होता है that causes this curve to shift upward. होता क्या है कि सेविंग कर्व जो है that shifts from S1 to S2, ये शिफ्ट हो जाती है S1 से S2 की तरफ सेविंग कर्व, और इसका जो अपवर्ड शिफ्ट होना है वो क्या करता है, that generates a gap, vertical distance between the n plus delta and the saving curve के इस पॉइंट के अंदर keeping the economy on the previous capital steady state level, उसके ऊपर एक distance आ जाता है, and that distance is basically called k dot over k is positive. That we say that we have the k dot over k as the positive one. K dot k हमारे पास जो है वो positive हो जाता है. So इसका positive होना जो है that basically we could say that कि हमारे पास पॉजिटिव ग्रोथ रेट आ जाती है. अब पॉजिटिव ग्रोथ रेट की वजह से हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, एंड कैपिटल विल बी इंक्रीजिंग till we get this k dot over k is equal to 0.
जब तक कि के डॉट ओवर के जो है वो जीरो के बराबर नहीं आ जाता, we say that the capital is continuously increasing, capital continuously increase हो रहा है, और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि ये के डॉट ओवर के का लेवल अचीव नहीं हो जाता। सो अगर हम देखें तो इसके सेविंग रेट के बढ़ने की वजह से हुआ क्या है कि के स्टार टू जो है steady state level has increased, and it will also increase the it will also cause the increase in the आउटपुट में भी वो इंक्रीज का बायस बनेगा। सो व्हाट विल हैपन हियर, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ऑल्दो के the economy has shifted from a lower steady state level to another higher steady state level, एक lower steady state level से इकोनॉमी हायर स्टेडी स्टेट लेवल के ऊपर शिफ्ट कर गई है, लेकिन जो कैपिटल पर कैपिटा ग्रोथ है दैट हैज अगेन रिटर्न टू जीरो। तो जो कैपिटल पर कैपिटा ग्रोथ है दैट हैज रिटर्न टू zero. So this has happened because of the permanent increase in the saving rate. अच्छा, next इसकी interpretation है an increase in saving from S1 saving rate from S1 to S2 due to the change in the behavior of household or government policy that raises the saving rate. There can be two causes of the increase and the saving rate. One could be the household and another one could be the government policy. उसकी वजह से जब saving rate बढ़ जाता है तो steady state भी जो है that will increase from that will increase from K1 star to K2 star, K1 star से K2 star की तरफ बढ़ जाएगा। And we'll analyze that how the economy adjusts when it is working, when it is in the transition from K2 star। ट्रांजिशन होगी K1 स्टार से K2 स्टार की तरफ, जब K1 स्टार से K2 स्टार फ्रॉम वन स्टेडी स्टेट लेवल टू अनदर स्टेडी स्टेट लेवल जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हाउ इट विल बी एडजस्टेड। So the gap between saving curve and the depreciation curve is positive. Saving is more than enough to generate an increase in K at the old steady state point. Old steady state point के ऊपर जो saving है that will be increasing, that will cause an increase in the capital K. As K increases, जैसे हम कहेंगे K increase करेगा, K dot over K that will be decreases and approaches to zero, and then K approaches to new steady state level which is K star 2. तो हम ये before reaching to the point K star 2, the K dot over K would remain positive but it will be declining. It can be suggested that by raising save rate again and again, economy can grow fast forever. ये सजेस्ट किया जा सकता है कि सेविंग रेट के बार बार बढ़ने की वजह से इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली ग्रो करवाया जा सकता है। सो इट कैन बी वन आर्गुमेंट, बट the problem is that saving rate is bounded, that has bounded by ranges from 0 to 1. हम ये नहीं कह सकते कि आर्गुमेंट कीजिए तो फिर बहुत आसान है कि आप हर मर्तबा सेविंग रेट को बढ़ाएं और इकोनॉमी भी ग्रो कर जाए। सेविंग रेट के अंदर इजाफा करते चले जाने से इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा टेम्परेरीली फॉर सम टाइम। सो इट कैन बी द वेरी सिंपल आर्गुमेंट बाय एनीवन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, हम ये कह सकते हैं कि लेकिन सेविंग रेट के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि सेविंग रेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सेविंग रेट क्योंकि एक बाउंडेड है, इट हैज सम बाइंडिंग दैट इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसकी बाइंडिंग जो सी है एक रेंज है और वो रेंज इसकी जो है 0 से 1 के दरमियान है, एंड दैट पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम 0 to 1 विल रिस्ट्रिक्ट इट के इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप हर मरतबा सेविंग रेट को बढ़ाते रहें और जैसे जैसे सेविंग रेट को बढ़ाते रहें वैसे वैसे कैपिटल ग्रोथ होती जाए, कैपिटल के अंदर इजाफा होता चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हम ये कहें कि पीपल सेव ऑल द इनकम, अगर लोग अपनी सारी इनकम को सेव करना शुरू कर दें, then we can say that the saving curve still cross depreciation line, and then there would be a steady state where long run per capita growth would stop because before reaching S there would be S gold। हम कह सकते हैं कि S1 S is equal to 1 से पहुंचने से पहले S gold आ जाए for the economy, and after that further increase in saving would lead the economy towards dynamically inefficient region। So we cannot imagine of saving to be
allowed to increase up to 1. हम ये नहीं allow कर सकते इकोनॉमी के अंदर ऐसे पॉलिसी एक्सपेरिमेंट के सेविंग रेट जो है वो तसलसल के साथ इजाफा होता रहे। जब भी सेविंग रेट बढ़ेगा, जैसे ही सेविंग रेट के अंदर तसलसल से इजाफा होता रहेगा, तो उस इजाफे की वजह क्या बने कि उस इजाफे की वजह से वो वुड सिंपली से दैट कि इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उन्होंने अपनी कंजम्पशन को कम कर दिया है, कंजम्पशन को कम करते जा रहे हैं और सेविंग को बढ़ा रहे हैं। एंड देयर कम्स द पॉइंट जहाँ पे एस गोल्ड आ जाएगा, और एस गोल्ड वुड बी अ लेवल जहाँ पे कंजम्पशन हाईएस्ट होगी या मैक्सिमम होगी एंड फर्दर सेविंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर उसके बाद भी इकोनॉमी जो सेविंग की तरफ जाती है तो वी कैन थिंक ऑफ दैट इकोनॉमी वुड बी डायनामिकली inefficient. So it is the argument that as an policy experiment, increase in saving rate will not always allow the economy to grow. हमेशा ही वो ग्रो कॉज नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा इकोनॉमी को ग्रो करने की। Then we can have one question, or someone can ask one question, that can economy grow just by increasing the saving rate? So its answer is that no, a big no. Economy cannot every time grow just by increasing the saving rate, ऐसा नहीं है। If the production function is new classical, अगर तो प्रोडक्शन फंक्शन न्यू क्लासिकल है, देन द आंसर इज नो। फिर इसका आंसर ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सेविंग रेट के हर मरतबा बढ़ाने से इकोनॉमी ग्रो करती रहे, बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। चूंकि इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल होल्ड करते हैं, and that will eventually bring the economy back to the zero growth steady rate. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे सेविंग रेट भी अगर बढ़ाते जाएंगे, तो एक तो रीजन जो पहले हमने एक्सप्लेन की है कि वन रीजन हियर इज दैट is of dynamic inefficiency. एक रीजन तो ये है कि डायनामिक इनएफिशिएंसी जो है that will also not allow saving rate to increase every time, or to allow the economy to grow every time, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। दूसरी ये है कि we can have diminishing returns to capital, और diminishing returns to capital चूंकि सेविंग के बढ़ने की वजह से कैपिटल में इजाफा होगा, और कैपिटल में इजाफा जो है that also have diminishing returns to capital associated with it, and what it will do, it will bring the economy back to the zero growth rate. Permanent long run growth is not possible just by raising the saving rate. सिर्फ महज सेविंग रेट के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी के अंदर परमानेंट लॉन्ग रन ग्रोथ नहीं मुमकिन, बिकॉज द सेविंग रेट हैज अ बाइंडिंग ऑफ 1, क्योंकि सेविंग रेट की एक बाइंडिंग जो है दैट इज 1, एंड dynamic inefficiency which is s is greater than s gold is there to encounter this growth. और हमारे पास जो है वो डायनामिक इनएफिशिएंसी भी एग्जिस्ट करती है, which will counter this growth. So growth is not possible simply by saying that कि हम सेविंग को बढ़ाते रहें और ग्रोथ होती रहे। Another policy experiment we can have, another policy experiment, वो policy experiment that we can have is change in the population growth rate. Population growth rate के अंदर जो change है that can also affect the steady state. The change in production growth reflects the change in the household behavior and change in government policies regarding the fertility. We can simply say that कि उससे क्या होगा, the population growth rate के अंदर इजाफा होता है, so we could say that if the change in population growth rate, no, if the population just declines, population के अंदर कमी आती है, तो it will increase the capital level, क्योंकि उसकी वजह से इफेक्टिव डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, एंड देन बिकॉज ऑफ द लोअर इफेक्टिव डेप्रिसिएशन मोर कैपिटल विल बी अवेलेबल टू ग्रो, टू हैव अ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अ डिक्लाइन इन एन लेबर के अंदर या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर एक डिक्लाइन जो होगा, दैट कैन कॉज शिफ्ट in the depreciation line, but that shift will be downward. उसकी वजह से कैपिटल जो effective depreciation line होगी that will shift downward. So there would be a new steady state level. उसकी वजह से एक नया steady state level आएगा that would be larger than the previous one, and that steady state level would be larger than the previous one because of the lower population growth, but lower effective depreciation. But long run growth rate of capital per person would again remain at 0. लेकिन इसमें होगा क्या
कि long run growth rate of capital per person जो है that would again become zero. Another thing that we can think of or using the same जो डायग्राम या जो मैकेनिक्स मैंने सेविंग रेट के ऊपर बात की, बिल्कुल उसी लॉजिक के ऊपर उसी तरह we can also talk about the technology using the same diagram. ये वाली डायग्राम जो है exactly almost same. You can make the same details here. यहाँ पे आप इसकी same details लिख सकते हैं. The improvement in that level of technology has also temporarily effect on the capital growth rates. जो effect होगा technology का, level of technology का effect जो होगा, that will also be temporary, transitional effect होगा. But इसमें होगा ये कि जैसे कैपिटल के अंदर जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा होगा, you would say that कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है that will be SF prime के increase in technology will directly affect the production function. टेक्नोलॉजी के अंदर जो इजाफा होगा that will be directly increase the production function. उसकी वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो उसके अंदर एक शिफ्ट आएगा. The shift will be because the input factors would remain constant. Input factors के constant रहने की वजह से या constant होने की वजह से जो एक efficiency factor है that will increase or that will cause a shift in the production function, and you may say that that shift in the production function will cause that saving curve to shift upward. और जैसे ये upward shift होगी, again we'll have k dot over k equal as a positive one. हम कहेंगे कि capital growth rate जो होगी वो positive रहेगी, और capital growth rate positive होने की वजह से we say that k will be continuously increasing, but again marginal productivity of capital will cause the k dot over k to decline, और यहाँ इसका इसका diminish होता रहेगा, and again there will be an equilibrium on some k star. एक नए steady state के ऊपर equilibrium कायम हो जाएगा. But very strong argument in when you compare level of technology and the saving rate. हम यहाँ पे saving rate के बारे में we have concluded one thing कि saving rate के continuously increase होने की वजह से हमेशा ही जो economy जो है वो it will not continuously grow. हमेशा ही economy जो सी grow नहीं करेगी. But we can also talk about that. Yes, technology is one factor in the Solow growth model that will cause a permanent increase in the economy. जो कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट का हर मर्तबा या लॉन्ग रन के अंदर एवरी टाइम इफ यू इंक्रीज द टेक्नोलॉजी ग्रोथ भी पॉजिटिव हो जाएगी. ग्रोथ ऑफ कैपिटल विल बी पॉजिटिव बिकॉज वी नो दैट कि टेक्नोलॉजी इज नॉट बाइंडिंग, इज नॉट बाउंडेड. टेक्नोलॉजी की कोई बाइंडिंग नहीं है. टेक्नोलॉजी इज नॉट something which have some restrictions. Technology जितनी भी आए that is right or that is required. Technology में जितनी भी improvement आती चली जाएगी that is required, and that is fruitful and required for the economy and for the economic growth and for the sake of development. So हम ये कहेंगे कि in the Solow growth model we have only one factor that can cause increase in capital growth every time whenever it is improved, and that particular thing is level of technology. जैसे जैसे level of technology improve होती चली जाएगी economy में, economy will be continuously having capital growth in itself.